Your full name? Sunidhi Rawat. You passed railway which year? 2019. You have visited courts or not? So sometimes, not regularly. When? Sometime, because 19 now it is 3 years. Which time? So not during the lockdown, but when I was free after graduation and before starting preparing for RJS, I visited courts with my father. This is your second time? Yes, sir. So why you are interested in this judiciary? So I wanted to do law. First, I decided in 11th standard that I wanted to do law. Then when I entered into law graduation, thereafter I decided for judiciary. Law graduation? Yes, sir. Your father is a development officer? Yes, sir. What kind of things can be done by this development officer in LIC? सर LIC में जैसे बीमा वगैरह होते हैं तो ही हैंडल्स दैट. उसके डेवलपमेंट आपका किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा इंटरेस्ट है? सर IPC, CPC. IPC में 2 आदमी आपस में झगड़ा कर रहे हैं. जी सर. अभी जब पीस हो गया तो किस एक्शन में उनको अरेस्ट किया गया? सर अगर 2 पर्सन किसी पब्लिक प्लेस पे फाइट करते हैं और ब्रीच करते हैं पब्लिक पीस का तो ये ऑफेंस एफएरए का बनता है विच इज़ डिफाइंड इन सेक्शन 159 एंड इज पनिशेबल इन 160. सजा कितनी? सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट द पनिशमेंट बट इट इज़ अकॉर्डिंग टू मी इट इज़ 1 month. And FRA and riot में क्या difference? FRA and riot. So in FRA there are 2 or more persons, but in riot there are 5 or more persons. And in riot there is an unlawful assembly, and any one or more of the person does any unlawful act towards that certain object. That is riot, which is defined. I'm not sure about the section right now. इसके साथ ही 145 के आगे कोई एक बहुत इम्पोर्टेंट सेक्शन है. So it is 149. क्या Yes. है? So And I how will. it is different with section 34? So section 34 is about common intention, where there are several persons doing a unlawful act in furtherance of or two or more doing a criminal act in furtherance of common intention, where they are aware about each other's intention. They are aware of the intention, whereas in common object 149 people are not aware of each other's intention, and there is pre-meeting of minds in 34 and not in common object. Premeditation. Pre-meeting of minds, yes sir. सेक्शन 500 के कितने एक्सेप्शंस हैं? There are 10. 2 बता दो. So any information given in good faith and merits of case, and yes sir. सबसे बड़ा ऑफेंस डिफाइन किया है आईपीसी वॉल्यूम के हिसाब से, वो कौन सा है? सबसे बड़ा, so it is murder. वॉल्यूम में मतलब इतना उसके अंदर प्रोविजन भी हो, एक्सेप्शन भी हो, ऐसा ऑफेंस कौन सा है? सेक्शन 500 ही है. ओके सर. बहुत एक्सेप्शन. यस सर. अभी गोल्डन टेम्पल में कुछ नारे लगे थे, खालिस्तान जिंदाबाद, तो ये आईपीसी में कहाँ पनिशेबल ऑफेंस है? सर ये सिचुएशन अगर अभी हुई है रिसेंट, तो मैं इसके अखबार में थी.
हाँ, मैं एक्चुअली इसके बारे में अवेयर नहीं हूँ, बट एक केस मैंने सेडिशन में बहुत पहले पढ़ा था जिसमें ऐसे नारे लगे थे कहीं पे खालिस्तान। हाँ जी सर। नहीं, स्पेसिफिक प्रोविजन दिया हुआ है आईपीसी। सर इफ इट इज सेडिशन, अखबारों में आ रहा है, रोज उठते हैं केसेस। अभी नुपुर शर्मा का मामला आया, नुपुर शर्मा नाम सुना? सर मैंने नहीं। अभी चर्चा में है, अखबारों में आ रहा है। ओके। नुपुर शर्मा की वजह से ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उदयपुर की जो हत्या हुई है वो कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा का दिया हुआ स्टेटमेंट में वो कारण बना है, इंस्टिगेट किया। ओके। तो नुपुर शर्मा के जो बयान हैं वो किस जगह पर पनिशेबल ऑफेंस हो सकते हैं आईपीसी? Sir, it could be under 124A sedition, but I am not aware. I cannot. 153A, 153 ए क्या है? B, ये नहीं पढ़ा? So I am not aware. हाँ जी सर। Okay, Sunidhi, Yes, can ma'am. you please tell us what is due process of law and procedure established by law? Ma'am, I will have to read on it. Okay. And can you please tell us what are the reasonable restrictions on Article 19? Yes, ma'am. Ma'am, there are different freedoms under Article 19, and then each freedom has different restrictions. Like first is freedom of speech and expression, which has the restrictions like sovereignty and integrity of India. Then there is defamation on morality grounds, on decency. Then there is freedom to assemble in any part of India, which has again sovereignty, integrity of India and public order. Then there is freedom to form association, then which is restrictions are sovereignty, integrity of India, public order and morality. Then there is freedom to move in any part of India and reside in. एब्सोल्यूट है क्या सर? Yes sir. एब्सोल्यूट पावर्स हैं? Yes sir. तो चेक किया तक नहीं जा सकता? So these are absolute powers. फिर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन क्लॉज क्या है? So I will have to read. I will have to read. रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस तो लगाई जा सकती हैं। Yes sir. बोलने पे भी लगाई जा सकती है और जितने आपने गिनाए ना, Yes, sir. उनमें सब में रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस कैन बी इम्पोज्ड। Yes sir. अभी नेट बंद हुआ Yes sir. तो कौन से प्रोविजन थे जिनकी वजह से नेट बंद कर दिया पूरे स्टेट? Sir, I am unable to get the question. Can you please explain? लॉ एंड ऑर्डर पे रेस्ट्रिक्शन हो सकते हैं। हाँ जी. जानकारी लेना भी तो इसी के फ्रीडम ऑफ स्पीच, Freedom of speech and expression. Yes. तो इसी का रेस्ट्रिक्शन है ये। Yes, sir. Yes sir. Such restrictions. Yes sir. It was for maintenance of peace and for public maintenance of public order. Thereby, the internet was shut down. So, what is doctrine of eclipse under Indian Constitution? Yes sir. Sir, if any law or part of law is inconsistent with Constitution, then that part is declared as void. And if any, only that part which is void, otherwise the rest of the part is valid. And if that void part, if there is any amendment done, then it could be revived. That is doctrine of eclipse. So, is there any leading case regarding that? Yes sir, it is Bhikaji Narayan case. Full name I am not sure, but it is Bhikaji Narayan Dhakra's case. एक्लिप्स पे कोई लॉ याद आ रहा है जिसके अंतर्गत ऐसा है? No sir. Any current law in IPC, is there any section which has yet not been amended but having imposed, basically the eclipse is being imposed upon that particular section? So I'm not sure. Section 377 देखा है IPC? Yes, yes, yes. Amend हुआ है क्या? Yes, yes sir. It has been partially amended. Yes sir. Amended है? हो गया amend? Amend, sir, it has been declared unconstitutional partially.
अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया है, किस केस में किया है कोर्ट में? Sir, it is Navtej Singh Johar versus Union of India. Okay, and from where this Navtej Singh Johar get the impression, get the room to basically establish before the Supreme Court of India? किस केस से क्या बेसिस था, क्या रेशियो था उसका? Sir, it was a case of NAS Foundation. नास फाउंडेशन तो वो तो ओवररूल्ड हो गया नाउ, लार्जर बेंच ने डिसीजन ले लिया, बट बिफोर नास, ठीक है, प्री जिसमें पोस्ट नास नवतेज सिंह जौहर आए, बट नवतेज सिंह जौहर के लिए रूम कहाँ से है? क्या वो बेसिक एलिमेंट क्या था जिसके बेसिस पे नवतेज सिंह जौहर का केस फाइल किया गया? So I am not sure. And how many judges have decided? Basically, कितने थे वो जजेस? क्या बेंच थी? कितनी थी बेंच? So I am not sure. That's why I won't comment on this. Puttu Swami's case? Yes, ma'am. क्या था रेशियो उसमें? पुट्टू स्वामी केस क्या था? So it was on right to privacy. That Aadhaar judgment. It was 3:2. Right to privacy. Yes. That become a This key was the element. room actually. Okay. 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 And what is rule of law, Sunidhi? What do you mean by Ma'am, rule of law? And from where it came in India, so now the judicial process is bound to follow this rule of law. Ma'am, I will not comment. Double jeopardy. Yes, sir. It says that no person should be vexed twice for the same offence, and in India it applies partially when a person is convicted and not when a person is acquitted. इसी तरीके का कोई सेक्शन सीआरपीसी में? So it is section 300 that talks about jeopardy, and there is in Constitution it is Article 20 Clause 2. Okay, can you tell me any recent amendment under CRPC? No, sir. आप किस तरह से तैयारी कर रही हैं एग्जाम्स? Yes, sir. 19 में पास किया आपने लॉ, Yes, sir. अब 2022 है, Yes, sir. तो किस तरह से आप तैयारी कर रही हैं फॉर अपीयरिंग इन फॉर कमिंग इन जुडिशरी? क्या करती हैं 3 साल से? सर मैंने कॉलेज के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया था कोचिंग करने के लिए। नहीं सर, मैंने जयपुर में ही किया था, तो वो 1 साल मेरी कोचिंग चली और उसके बाद फिर मैंने सेल्फ स्टडी करी है। मैं मार्क्स देख रहा हूँ आपके। हाँ जी सर। लॉ में बड़े कई जगह बड़े प्योर मार्क्स हैं, कहीं बहुत अच्छे हैं, ऐसा क्यों? सर मैं ग्रेजुएशन के साथ साथ आरजेएस की तैयारी करने लग गई थी, तो कुछ सब्जेक्ट और इंटरेस्ट की भी मेरे को थोड़ा था। जिन सब्जेक्ट्स में मेरे को इंटरेस्ट आ रहा था वो मैंने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिए, और जिससे थोड़ा कम इंटरेस्ट। सुनीधि, you have mentioned extra curricular activities, athletic sport, which athletic? यस सर, एक्चुअली मैं स्कूल तक ही स्पोर्ट्स में थी, एक्चुअली मोर टूवर्ड्स स्पोर्ट्स स्कूल टाइम पे, और उसमें मैंने फ्रॉम 7th स्टैंडर्ड मैंने 11th स्टैंडर्ड तक अपने स्कूल को रिप्रेजेंट किया था एथलेटिक्स की टीम में, एंड उसमें मैंने नेशनल्स भी खेले हैं 3 बार। आई एम नॉट वन इन नेशनल्स बट रिप्रेजेंट किया है अपने स्कूल को मैंने नेशनल लेवल पे। सर हुसैन बोल्ट है। हुसैन बोल्ट क्या? हाँ जी, मेरे को ये तो नहीं पता है। अभी किसी को एथलीट को राज्यसभा का मेंबर बनाया क्या? नॉमिनेट हो गया। आई डोंट नो सर। बहुत फेमस नाम है। फेमस महिला है देश में। ओके, आई एम नॉट। देश में महिला जिसने इंडिया का नाम आगे किया, उसका नाम बता सकते हैं? सर आई एम अनेबल टू रिकॉल इट। पीटी उषा का पीटी उषा, हाँ जी मैंने सुना है। ओके। And you have mentioned your hobby cooking. यस सर। तो विदाउट फायर कोई कुकिंग हो सकती है? सर हाँ, हो सकती है। ऐसी डिश बताइए। सर बिना फायर के मैं भेलपूरी बना सकती हूँ। ओके, इट्स अ स्नैक। हाँ, स्नैक। सब बिना फायर के भेलपूरी इज़ वेरी इजी इफ़ यू कट द वेजिटेबल्स एंड देन यू हैव भेल एंड डिफरेंट सॉसेजेस एंड यू कैन मिक्स देम एंड इट्स डन। गुड लक। Thank you, sir. प्रैक्टिकल थोड़ा ट्रेनिंग ले लो। जी सर। ओके सर, थैंक्स मैम। बेटा पढ़ने की जरूरत है। Yes, जी, and the thing is that never say like that कि I have to deal with. आई हैव टू Deal with.
Deal जो with. बार बोल रहे हैं, जो प्रश्न आपके उत्तर आपको नहीं आता, आप Okay. उसको बोलते हैं कि I have to deal with. No. ठीक Okay. है, बोर्ड के सामने I have to deal with नहीं बोलना है, Okay. आपको सॉरी बोलना है, ठीक है, सॉरी सर, Okay. राइट नाउ आई कांट प्रिपेयर इट, ठीक है, Okay, sir. I have to deal with नहीं बोलते. Okay. Okay. I said read with. I will have to read about this. डील विद आपके मुंह से निकल रहा था बार बार. तो गलती से मुझसे हो गया होगा. I accept that. और हाँ, read हो भी गया नहीं. होगा. ठीक है, सॉरी सर, राइट नाउ आई एम नॉट रिकवरिंग. जी सर. दैट विल बी मोर एप्रोप्रिएट आंसर. जी सर. रीड विद का मतलब ये है कि आपने पढ़ा नहीं. पढ़ा नहीं. कुल जी. मिला के जो याद नहीं है, जो समझ लिया, उसके लिए ऑनेस्ट एडमिशन ओके. नहीं. ओके सर. लेटेस्ट केस लॉज आप चाहिए देखिए. It's very important. Leading judgments very important. जी. Bunch of leading judgments are there. Go through it. There is a website. I know. Maybe you are aware with that. Live law. Yes sir. Live law. Yes sir. Yes sir. They have basically. क्या किया उन्होंने? It's like a cluster of lots of the leading cases are there. Okay sir. ठीक है. Please go through with that. Okay sir. Newspaper कौन सा पढ़ते हैं आप? Sir, I'm not reading newspaper. Please go through with that. It's very Okay. important. Okay. ठीक है. Okay, That's why आप नुपुर शर्मा सर ने पूछा. हाँ इससे जी. आप aware हाँ हैं. जी. मतलब ये तो अभी And बहुत it is ज्यादा expected. हाँ everybody जी. knows. Yes. क्या है नुपुर शर्मा और कन्हैया लाल का मैटर, everybody knows about it. और उनका Ma'am, I will खुद का read about कुछ all of नहीं these. रहता, दूसरे लोगों के साथ चिकनी Okay. Okay sir. Then what extra I can do? Yes, actually, you have to be aware with surroundings. Surroundings. It's very important. Okay Okay, sir. first and foremost thing, and another thing is that the knowledge of the law, that is very Okay. important. Okay. Or basically the elementary level as well as advanced level. Well, what Okay, kind of development, especially in Okay. the core areas Okay. like evidence, constitution, कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे ये हाँ तो जी. बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे गए, हाँ जी. तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि आप बेसिक क्वेश्चंस तो एटलीस्ट Okay. Okay है ma'am. ना. और अभी क्या है, करंट से रिलेट करो सारे लोगों को. जी सर. Okay. अभी करंट अफेयर्स में लोग जैसे अभी ये जो रेड होती हैं, ये किस एक्ट में होती है? Read as in? मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पढ़ा? नहीं सर. सुना है, पढ़ा नहीं है मनी ये लॉन्ड्रिंग. MLA में पढ़ा होती है, है. लेकिन अभी तैयार करना पड़ेगा आपको. ये Okay, sir. रोजाना ये चल रहा है, ईडी की यहाँ ईडी की जांच होती Okay. है, Okay. तो वो किस प्रोविजन में होती है, किस ऑफेंस के लिए होती है? वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग. Okay sir. I will do. तो ऐसे जो रोजमर्रा आ रही है, उन बातों को आप अखबार से जानें और फिर पढ़ें. रेलेवेंट लॉ भी देखें. Actually, judge must be aware with all the facts. With yes sir. He knows everything. उसके पास एक तीसरी आंख होती है. जज, ठीक है, न्यायाधीश is like a god. God knows everything. Yes sir. It's very reputed, very honorable post for which you are pursuing. So you have to be aware with all the facts, all the knowledges, whatever is relevant to be. जी सर.